28th February is an important day for all scientists, science students, and even general public in India, as this day is celebrated as National Science Day, and today there is no area where science hasn't put some impact. This started in 1986 when the National Council of Science and Technology Communication asked the Government of India to designate 28th February as the National Science Day. The aim was to spread the importance of science and its applications in making our lives better and comfortable. This proposal was accepted by the government, and the first National Science Day was celebrated the next year in 1987. 28th February was chosen as the day to celebrate National Science Day, as it was on this day in 1928 when our great scientist Sir C.V.Raman discovered the Raman Effect, which was one of the most notable discovery of that time. ये डिस्कवरी कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट थी और इसके पीछे की कहानी भी बहुत इंस्पायरिंग है। जिस समय सर सीवी रमन ने ये डिस्कवरी की, तब इंडिया एक गुलाम देश था। इंडियंस के पास ना तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी और ना ही सपोर्ट। वेस्टर्न वर्ल्ड खुद को बेस्ट समझता था और गुलाम देश के लोगों को ना तो फेयर चांस मिलता था और ना ही उनकी डिस्कवरीज को कोई इम्पोर्टेंस। इन एडवर्स कंडीशंस में भी रमन जी ने अपनी मेहनत और हार्ड वर्क की बदौलत न केवल रमन इफेक्ट की खोज की, बल्कि इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। ये न केवल इंडिया का बल्कि एशिया का फिजिक्स की फील्ड में फर्स्ट नोबेल प्राइज था। The story starts in 1921 when Raman was returning to India via sea route. He became fascinated by seeing the blue color of the Mediterranean Sea. उनके माइंड में ये क्वेश्चन आया कि समुद्र का पानी नीला क्यों दिखता है, जबकि पानी तो रंगहीन होता है। इसी पानी को अगर एक ग्लास में रखें तो वो कलरलेस है और समुद्र में होने पर वो नीला दिखता है। नाउ दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो शायद बचपन में हम सबके दिमाग में कभी ना कभी आया होगा, पर हर कोई इस क्वेश्चन के पीछे ऐसे नहीं पड़ा होगा जैसे रमन पढ़े। उनके अंदर के साइंटिस्ट ने तब तक इस क्वेश्चन को जगाए रखा जब तक उसका एक्सप्लेनेशन नहीं खोज लिया। उस समय तक लॉर्ड रेले नाम के साइंटिस्ट ने इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट की हेल्प से ये बता दिया था कि स्काई का कलर हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है, और उनकी ये डिस्कवरी बहुत फेमस भी हुई थी। सी के ब्लू कलर के बारे में उनका कहना था कि ये स्काई के रिफ्लेक्शन की वजह से हो सकता है। Now, Lord Rayleigh was a great scientist and also a Nobel Prize winner, but C.V. रमन जी को ये एक्सप्लेनेशन सेटिस्फाई नहीं कर पाई। उन्होंने एक छोटे से प्रिज्म और कुछ बेसिक एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से इस एक्सप्लेनेशन को खारिज कर दिया। ये एक बहुत बड़ी बात थी। एक नोबेल प्राइज विनर जिन्होंने एक्सेप्शनल डिस्कवरीज की हों, जिनकी इंटेलिजेंस पर कोई डाउट नहीं था, उनकी एक्सप्लेनेशन को रमन जी ने मानने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें खुद पर विश्वास था, साथ ही अपनी बात सामने रखने की हिम्मत भी थी। उन्होंने इंडिया लौटकर अपनी एक लैब सेट की और लग गए अपनी खोज में। ये डिस्कवरी इतनी आसान नहीं थी। उनके पास ना तो बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स थे और ना ही कोई फंडिंग। अपनी बिल्कुल ही बेसिक सी लैब में उन्होंने खुद के बनाए सिंपल स्पेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से वो ढूंढ निकाला जो बड़े बड़े साइंटिस्ट अपनी सो कॉल्ड एडवांस लैब्स में सोफेस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से भी नहीं कर पाए थे, और इसी खोज ने उन्हें 1930 का नोबेल प्राइज भी दिलाया। Let us learn about Raman effect in simple words. Raman effect is basically the process of scattering of light by the molecules of a medium. Light consists of photon particles. When they strike molecules in the medium, they bounce back and scatter in different directions depending on the angle with which they hit the molecules. Most of the encounters are elastic, and so energy and frequency of the scattered photon is same as that of the incident photon. This type of scattering is called Rayleigh scattering. However, for 1 in 1 lakh photons, this scattering is inelastic, and so the scattered photon has energy and frequency either less or greater than that of the incident photon. If the frequency is less, then we get Stokes lines, and if the frequency is greater, we get anti-Stokes lines. These Stokes and anti-Stokes lines are together called as Raman lines, and this scattering is called as Raman scattering. This Raman scattering is a very weak effect, as only 1 in 1 lakh photons showed this effect. This was the reason why this effect was not discovered earlier. But Raman's patient observation and brilliant insight discovered this phenomena. The significance of his work was quickly recognized by other scientists.
In the first 7 years of its discovery, this effect became so popular that more than 700 science papers were based on this, and Raman spectroscopy was seen as a tool to study the vibration and rotation of molecules. The unique spectrum of Raman scattered light for any particular substance serves as a fingerprint for it and can be used as qualitative analysis for it. Raman spectroscopy can be applied to solids, liquids, as well as gases, and unlike other methods, it could be easily applied to aqueous solution, giving information about what is present in it and in which quantity. After the invention of laser lights, Raman spectroscopy became even more effective and is now used in numerous areas. Raman scanners can detect illegal drugs or items being carried by people at airports, etc., in seconds. It is used in petrochemical and pharmaceutical industries to monitor the manufacturing process. Nuclear waste can be analyzed from a safe distance using it. The molecular structure of carbon materials and semiconductors can also be studied using Raman spectroscopy. Even in the field of medical and life sciences, it has so many applications. इस डिस्कवरी के इतने साल बीत जाने पर भी इसकी इम्पोर्टेंस कम नहीं हुई है, बल्कि आज भी नई नई फील्ड्स में इसकी एप्लीकेशंस सामने आ रही हैं. Let us come back to the original question which led Raman to discover Raman effect. Why does the seawater appears blue? It is due to the inelastic scattering of light by water molecules. The scattered light mostly falls in the blue color range, making the seawater appear blue. The water in the glass also does the same scattering, but as it is very weak, I have already told you 1 in 1 lakh photons does this type of scattering, so we are not able to observe Raman scattering in the glass of water. To commemorate this wonderful discovery of Raman effect, India celebrates National Science Day every year on 28th February. The purpose behind this day is to encourage the youth to develop interest in science and realize its importance. I hope this video also serves this purpose and help in developing a scientific temperament among students where they try to see each problem from a scientific perspective. Thank you for watching this video.